plants and related matters. The PPV&FRA was the sui generis, it is a unique system all over the world, which India adopted first. And I also welcome our director, CSIR Sima, is kind enough to be here and given his time, he has spared his valuable time to be with us. I welcome you all of my friends, my colleagues, and all the participants. Also, many of the people they are connected through Microsoft Teams. So I welcome everyone to this August gathering, and there's a beautiful afternoon. We will learn about the PPV&FRA. I have been told to say something about the event. Then CSIR is celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav. Maybe in detail, Madam Vibha will tell about that. And under that Rashtriya Bodhik Sampat Mahotsav, this campaign has been taken up. This has been initiated. So simultaneously, after welcoming, another task I have to give biography of our guest. But you have a long background. First of all, I will start with Dr. Vibha Malhotra Sahni, presently working as scientist and head Technology Management Directorate and Innovation Protection Unit. He is the head of both the unit of Council and Scientific Industrial Research. Under her guidance, TMD facilitates development of thematic roadmap and strategy for CSIR in key industrial sectors. CSIR connect with line ministry, state governments and other organizations on one hand and with industry on the other for providing high quality technology based product services as well as competitive advantage to citizens of the country. IPU protects, maintains and manages the entire IP of CSIR, including patents, trademark, copyright and design. And she is herself a biochemist in her qualifications, but she manages all the IP related to CSIR. Then coming to Dr. Prasad, sir, you have a big biodata. I will try to. Dr. Devi Prasad, he is a graduate of IRI. He done his PhD in floriculture. Got selected of director, ICR Director of Floriculture Research Pune during October 2015. He has lots of research management activities in which he has mastered. And since 2015, he is the director. Scientific accomplishment, genetic improvement of flower crops. There are several varieties, chrysanthemum varieties, rose varieties, 5 rose varieties, and he has worked in many other varieties. Then commercialization of technologies like 7 varieties of chrysanthemum, development of methodologies like DOS test methods, development of different technology like high frequency induction of novel mutants, technology for in vitro, direct regeneration, nutraceutical pigments. He is also involved in postgraduate teaching when he was at IRA, New Delhi. And he has several outreach programs. Of course, the director of DFR is supposed to be in the outreach program. Institute building, he has activity. Then he has many new research initiatives, like initiated research in vitro induction of nutraceutical anthocyanin pigments, initiated research in vitro induction of carotenoid pigments, Italian pigments from Bougainvillea. These are the first time in the country. Then standardized in vitro regeneration for chimeric ray fluorides to establish 18 mutants, out of which 4 are released in real estate. Then plant breeder side, the first time in the country, DOS test guidelines he has given. Then there are developmental initiatives. He is also involved in IRA Jharkhand. He has several awards and recognition like prestigious BP Pal gold medal. This is a very prestigious medal for any agricultural scientist to get. Then Horticultural Society of India gold medal. Then he has several best paper awards and recognition of many societies. He is member secretary of High Court Committee, constituted Minister of Agriculture, Corporate Development Program, the 11th 5-year plan.
Government of India, the member secretary in many task force, the nodal officer of IRA, officer in charge of ornamental horticulture. Then they have lots of fellowships. I think I was thinking of it. Go on, ready. So go with your. Then Dr. Dipal Rai Chaudhary, the presently working as Joint Register Protection of Plant Varieties and Farmer Rights Authority, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Government of India, since 2008. Major responsibility in plant variety registration, task testing, and centers for the National Agriculture Research System and National Gene Bank. Apart from that, worked as a member secretary for different task force for development of dust test, guidelines, standing committee, nodal officer of ISRI dust test knowledge management software. He has edited 2 volumes of Agrobiodiversity Hotspots of India that found the basis of plant genome Xavier Awards, and also published other technical and scientific reports from time to time regarding plant variety protection. Previously worked as scientist in DIFAC, DST, and other scientific and industrial research organizations like TIET Patiala and TERI New Delhi. This is in brief about all the 3 guests, and I welcome you, sir, to this auspicious meeting and training. And thank you very much for coming here and enlightening us. Thank you. Thank you so much, sir. It's my pleasure to call on the dais Dr. K.V. Prasad, Director CSIR-NBRI, for his opening remarks. सबको नमस्कार. Very distinguished director of NBRI, Dr. Jit Shashni, Dr. Vibha Muratra, Dr. Dipal Rai Chaudhary, very distinguished colleagues of CSIR-NBRI, student friends, ladies and gentlemen. Thank you very much for this wonderful opportunity to be part of these celebrations. At the outset, let me compliment NBRI and Dr. Ajit for celebrating National Intellectual Property Rights celebrations. And it's very apt to call Dr. Dipal Rai Chaudhary to deliver the keynote address today. When we talk of intellectual property rights, there are many forms of IPR. For my student friends, let me tell you, we all enjoy Coca-Cola, right? Unless your mother and father says no, you have to drink it. So is the Pepsi Cola. So the formula that goes into Pepsi or Coca-Cola is a top secret. Nobody knows what it is. It is a very closely guarded secret and it is protected by highest security. The formula is a secret. It is protected through IP. That is one form of intellectual property. Right? When you read novels or some good books, there is always written as copyright. Okay? It's written as copyright. So that is a form of, again, one more IP, intellectual property. Any gadget that we are using, the price is high because of there is a lot of IP. Your Apple mobile phone costs you about 1 lakh, brand new model. The Jio just now launched a mobile which is $800. There's a difference. The cost involved in 1 lakh mobile contains a lot of IP applications, components. So this intellectual property, when we are talking about plants, varieties, we call it as plant variety protection. Across the world, there are many systems which are operating, which offer plant breeders' rights, or called as plant variety protection. I compliment both PPV&FRA and NBRI
for creating this awareness program because the awareness among the general public, academia, and students on plant variety protection is very, very minimal. That we often face when we conduct interviews for the DVS project that we have in our institute. MSc, PhD students, when they come and then when we talk about what is plant variety protection, they will start telling about plant protection against to take care of the insect pests and diseases. So this particular problem is lagging behind our on the thought process. So we also frequently try to conduct awareness programs to educate people about an act which came in 2001 as PPV&FRA. A Act stands for Act, Protection of Plant Varieties and Farm Stewardship. As Dr. Ajit said, this is adopted from basically, there is one more international organization called as UPOM. We have taken the essence of UPOM and good things about the other systems that are in place across the world. For Europe, they have a community plant variety office. In America, they have plant patents. And some of the other countries, they do have dual mechanisms like patents as well as plant variety protection. So taking all the good things into account, we have a system called as PPV&FRA. It is a suite-generated system that is, it's a good mixture of everything, all the good things. And that is being implemented across the country. And as of now, we have so many crops which are covered under PPV&FRA Act. We operate through a system called as TUS that he is going to explain in his talk. In English, there is a saying called as an early bird catches the worm. We were fortunate to be those early birds. When the Act came in 2001, I was in IRA working on flower crops. So this is two crops were there in the first phase of development of devious respiratory, rose and chrysanthemum. I was involved in development of those test guidelines from 2001 onwards, and even today we do that as a regular activity in our institute. So it's a kind of a system where awareness is not there much. And suppose if something goes wrong or somebody is propagating a material illegally, even if I go to police and say that so-and-so gentleman is propagating my material illegally, there is no system to address that because the police is also not aware. Right? They will be saying that I have any more serious complaints to deal with, not this. So therefore, the public awareness about this is very, very important. And the endeavor of PPV&FRA to promote this kind of activities is to drive down the point that every person who is involved in agriculture, they should be aware of this, the rights that they have. The uniqueness of our act in terms of farmers' rights and in terms of varieties, all those things Dr. Deepak is going to explain. And we were there in PPV&FRA for quite a long time. Initial days, Deepak was there, and I also happened to be at IRS. So, got the benefit of the knowledge. We gained this knowledge over a period of time because the awareness during those days was also very, very minimal. Nobody was not knowing about what is plant variety protection. So thank you very much for your attention. Thank you very much, Dr. Ajit, for making me part of these celebrations. Thank you so much. Thank you so much, sir, for enhancing our knowledge. Now I request our guest of honor, Dr. Vibha Malhotra, Head Innovation Protection Unit and Technology Management Director at CSIR, to briefly about genesis of this program. Thank you. Very good afternoon to all of you. It's after a long time somebody saying that. Okay. So in fact, Dr. Prasad has made my job very easy. When the government of India
under the Azadi Ka Amrit Mahotsav, they decided to also create an if India has to be an innovative nation, we have to at least be aware of our rights, of the rights of our intellect that is there within each one of us. And for that to be, of course, and anybody would say, especially the students would say, my knowledge is my own. And many a times we hear this, whatever you might have, any form of property, whether movable or immovable, anybody can easily take it away from you. What remains with you is the knowledge that you accumulate, the knowledge that you generate through your own experiences. So how is it that you have to protect it? And why should you? It's there within you. But the reason why we need to have some kind of a legal structure in place even to protect our own knowledge is, as again Dr. Prasad said, many a times, you are not given the recognition for the knowledge that you have generated, the knowledge base that you have developed over years through your experience, through all other things, the entire environment, whatever is there within you. You are proposing something. Okay, somebody might not, the powers that are there might not really hear you, but yes, tomorrow somebody else might propose that and take it as his own IP. So where is that protection that the IP originally belonged to you? So that is where this IP protection becomes very important. And when the government started this entire process of creating IP awareness, CSIR was given this role, to be the forerunner, because we happen to have both societal as well as industrial connect. And CSIR in turn, we connected with, of course, all DSIR, that's our parent department, as well as all other sister departments within and sister organizations within DSIR, that's NRDC, CER, and also the patent office, and DPIIT, that's the Department of Promotion of Industry and Trade, under whom the patent office is a part. And of course, when it came to protection of plant varieties, PPV&FRA was a natural partner. Sanrachna Foundation is another organization, an NGO, which the patent office has brought to us. So all of us have come together to create this awareness. And within the CSIR system, of course, our whole idea is to at least create awareness amongst minimum 75,000 people across the country. So CSIR labs, which are spread across the length and breadth of the country, each one of the labs is, organizing events. We had said a minimum of 2 or 3 events. And I'm very happy to see that, so many events are being organized around different aspects of IP by all the labs. And IMMT Bhubaneswar, in fact, has started an IP route. And the idea behind this IP route is to not only spread awareness of IP across Odisha, but also to, in some way bring awareness of the technological and the innovative products that CSIR has developed, technologies and products that CSIR labs have developed. So all the CSIR labs are in some way or the other
they are part of that particular IP wrap, the Yatra that started, I think, 1 to 3 days back. They've already covered 120 kilometers across Odisha, touching many schools, many colleges, and what is felt is it is amongst the student community, right from school onwards, who have to be, made aware of intellectual property. And I'm glad NBRI, CMAP, all of you have come together to create awareness on plant varieties and farmers' rights. And thank you so much to PPV&FRA, Dr. Deepak Roy Chaudhary, for agreeing to be part of this and delivering this talk. So thank you all very much for inviting me. Thank you, Dr. Ajit. And I wish you all the best for this. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. It's my profound privilege to call Dr. Deepak Roy Chaudhary, Joint Registrar on Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Act, for his keynote address. Will be. Stand here. And huh? No issue. Okay, you can stand. But white or no? Doesn't it? नमस्ते कैसे लग रहा है आप लोगों ने आके मेरा काम काफी बिगड़ दिए हैं और मुश्किल में भी पड़ा मैंने जब सोचा था कि जब माननीय मंत्री महोदय ने 1 तारीख को जब इस केयर में इस प्रोग्राम के शुरुआत किए थे उस समय बात ये हुई थी कि PPV&FRA विल बी अ पार्टनर एंड जिस जगह पे CSIR की लैब है उस जगह पे PPV&FRA जहाँ पे पौधे के ऊपर काम हो रहे हैं वो करेंगे तो कल हमारे एक साथी जम्मू में थे आज शायद वो श्रीनगर जा रहे मेरे को भी जोरहाट में भी ये प्रोग्राम है मैसूर में भी लोग गए हैं तो उम्मीद है कि इसके जरिए हमारे जो बातें हैं आम जनता के सामने रख सकते हैं पौधे की जो पादप संपदा की जो प्रोटेक्शन के बारे में हम लोग कहते हैं पिछले 15-20 साल से इसके ऊपर काम कर रहे हैं इसके साथ फार्मर्स राइट्स के भी हम लोग काम कर रहे हैं इसके बारे में आप लोगों की जागरूकता पैदा करने की थोड़ी सी कोशिश है मुश्किल ये है कि मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है I was expecting only scientists and technical people really speaking. I didn't know that the students will be here. So the job is difficult. Whatever, I will try my level best. आप लोगों को कहीं पे भी लगे कि इसमें आपको जानना जरूरी है तो क्वेश्चन अगर करें हाथ उठाए क्वेश्चन करें उस बीच Sir, inviting us for that. As I said, many of our colleagues are at different CSIR lab.
Hello. Yeah. So I'll be talking about implementation of Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Act. This was passed by Indian Parliament on 30th October 2001. And you can see that there are two aspects of this particular act. One is the protection of plant varieties, which is one part of the IP. There are 7 or 8 IP which is there in India, as Madam Dr. Viva has said. There are patents, trademark, trade secrets, so on and so forth. So plant varieties is one form of the IP, and it is probably the newest form of the IP. Along with that, when the government of India was thinking to enact this act, as Dr. Prasad was telling about, that we brought this essence from Europe. There was an organization called IPA, which is under WIPO, World Intellectual Property Right Organization, under which that administered the plant variety protection in about 75 member countries as well as 2 organizations. So we brought this concept of plant variety protection in India, but then the civil society organizations led by Professor A.M.S. Swaminathan and some other members, they forced government of India to incorporate a concept of farmers' rights, primarily because we are an agrarian country. Our economy is still survived by when the agriculture survives. Every day we talk about farmers as well as the state of agriculture, if there are rain, what the crop will be, whether we will have enough food grain to sustain our 1.4 billion population or not. So that's why this act combined both protection of plant varieties and farmers' rights act. So there is an historical perspective. I do not know whether you will be interested to know the entire history. The work started in 1930, but maybe the discussions started much before that. But the Plant Patent Act was enacted in 1930 at the United States. And after that, there were discussions about plant variety protection in Benelux countries. Benelux countries is the Belgium, Netherlands, Luxembourg, so on and so forth. That ultimately lead to the UPOV Convention on Plant Variety Protection. Some of the essence was also discussed at FAO, the Food and Agriculture Organizations, that led to international undertaking for plant genetic resources that conceptualized breeders' rights as well as farmers' rights. In 1994, the Uruguay round of negotiations, all about trade in intellectual property right, that ultimately culminated into General Agreement on Trade and Tariff. This has incorporated the plant variety protection, which ultimately led to the foundation of World Trade Organization in 1995, and India was a founder member of this WTO. The WTO enacted also a TRIPS agreement under these member countries, the trade-related intellectual property system, which also says that the member countries has to give a plant variety protection either by plant patent, a system on its own, or by a sui generis system. So India opted initially a breeders' rights, then converted into a sui generis system, as Dr. Prasad and Madam has also talked about. We also have incorporated several of the initial international considerations. As I said, as on date, the plant variety protection system under the umbrella of UPOV is there in about 75 member countries. India is not a part of UPOV members, primarily because we have incorporated our farmers' rights, where the farmers are about 60% of the population, whereas if you go to the developed countries, there are only 2 to 3% of the farmers. They do not talk about farmers' rights, and why I will come into later picture. But right now, India is not a part of this umbrella organization. India is an observer, and unless and until this international convention recognizes the farmers' rights in total, the way that our parliamentarians has conceptualized the way it should be implemented, India cannot be a part of that international convention. So when this act was thought about, there was a joint parliamentary committee led by late Sahib Singh Verma. So they
incorporated several concepts of breeders' right from international treaties, negotiations, rules that has the GURT. आप लोगों को पता है GURT क्या है? इसके बारे में आप लोगों ने कभी टर्मिनेटेड टेक्नोलॉजी के बारे में सुने नहीं सुने? टर्मिनेटेड टेक्नोलॉजी एक कंपनी ने इन्वेंट किया था, जिससे कि वो जीन अगर उस पौधे में रहते हैं तो seed that it will produce for the next generation, it will not germinate. You know then what happens to the agriculture? आज के दिन पे एक किसान मंडी में जाते हैं बीज खरीदने, वो लगाते हैं, फिर उसको उगाते हैं, उगाने के बाद जो फसल पैदा करते हैं उनमें से कुछ बीज वो अपने लिए रखते हैं, मार्केट में बेच देते हैं। अगर उसके अंदर टर्मिनेटेड टेक्नोलॉजी होता, वो बीज वो लगा के अगले साल वो फसल पैदा नहीं कर सकते। जिस वजह से हम लोगों ने ये अडॉप्ट किए कि कोई भी प्लांट वैरायटी जिसके अंदर वो टर्मिनेटेड टेक्नोलॉजी होगा, वो भारत में उसके प्रोटेक्शन नहीं दिया जा सकता है, जिसको जेनेटिक प्रिजर्व रेस्ट्रिक्शन टेक्नोलॉजी करके विदेश में बोलते हैं। इसके अलावा सॉवरेन राइट्स है। किसान इस एक्ट तो 2001 में आए, लेकिन किसान तो सदियों से वो प्लांट वैरायटीज के ऊपर सदियों से उन्होंने एक हक जताया है कि आपने उस हक को आज अब नया रूल बना के खत्म तो नहीं कर सकते है ना, नहीं करना चाहिए। तो उसके राइट उनके ऊपर वो हक आज भी है। ये हक फाओ की इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज की आर्टिकल 9 में बोलते हैं कि द राइट्स ऑफ द फार्मर्स एंजॉयड since millennia, before, during or after coming of any sovereign intellectual property right in any country, the farmers will enjoy that right. Unfortunately, India is the only country, or let's say fortunately, India is the only country that has recognized that kind of right and given that right to the farmer. No other country in the world. Right now, there are about 160, 170 member countries under the United Nations. But not a single country. Everybody talks about, in all international forums, they talk about farmers' rights. That's fine. But India has only recognized that farmers' rights. There are also ABS, access and benefit sharing. So when you access the plant material, for example, I want to develop a certain medicinal plant from CMAP. And the CMAP has actually taken that medicinal plant from a farmer's field. So I have developed a new variety. So when I commercialize, I will definitely earn certain amount of money. I should have given certain amount of money back to the farmers or the community, those who have originally conceived. So these kind of concepts were incorporated in our act for the farmers' rights. You see, the breeders' right has also come. Apart from that, we also have certain domestic legislations. You see that on the right hand side, you can see the Biodiversity Act, which was enacted in 2001. There is an organization at Chennai, which is a parallel organization. So we look after only the plant variety protection, intellectual property part of the plant variety protection, whereas the National Biodiversity Authority, which is at Chennai, they work on the entire biodiversity, which is not only the agrobiodiversity, which we look after. So apart from that, there are seeds act. So these are the concepts which were initially put into the PPV&FRA Act, and primarily we have 4 major objectives as on date when we have enacted this. The first one is to provide an effective system for plant variety protection. The rights of the farmers and the breeders. You see that in every intellectual property right, when you write an act, everywhere you can see that the plant breeders' rights takes precedence from the farmer. It is only the India where we say that the farmer's rights should be protected first, then the breeder's right will be protected. So that's why we give a certain amount of leverage and importance to our traditional farmers. Simultaneously, there are communities, there are men, women, rural communities who are conserving plant varieties, which forms the bedrock of plant breeding, from where the traditional universities, research institutes breed new varieties, and those are marketed. So the original germplasm, which is being conserved by the farmers, traditional communities in different agrobiodiversity hotspot areas, which we have identified,
The FAO undertaking, Food and Agriculture Organization and ITPGRFA says that you have to recognize them. So that is the essence when we have instituted an award called Plant Genome Savior Community Award, which we will be talking about. Then also that this act should protect the plant breeders' rights to stimulate investment. So if an organization, when Dr. Prasad was talking about that, a single Apple mobile costs you 1 lakh rupees, but it has embedded IP systems from where they're getting money out of it. So these companies who have invented and give the rights to use that in the mobile handset, they also get certain amount of money back. So that money will be used for the next generation R&D to develop newer and better product for our future. So this is also one of the objectives for us, and also find simultaneously that by the way that you develop a new varieties, it will facilitate the growth of the seed industry. The farmers will get a high quality seed and planting material. So these are the rights which we have: community rights, farmers' rights, breeders' rights. We have provisions for the gene fund and compulsory licensing. Then we have benefit sharing, the researcher rights. So these are different parts of that, the act. The process of registration, as I said, is entirely different from any of the patent system or so. We identify a crop. So Dr. Prasad was talking about since 2001 they have started. In 2001, Government of India identified initially 35 major crops: rice, wheat, dhan, gum, मतलब गेहूं, आपको इसके बाद मिलेट्स है, मेज है, और सारी फ्रोजन क्रिसैंथेमम भी उसके अंदर. इसकी गाइडलाइंस बनाए हैं. इस गाइडलाइन बेसिकली बोटानिकल डिस्क्रिप्टर्स हम बनाए. इनमें से एग्रीकल्चर साइंटिस्ट की काम कम थे, टैक्सोनॉमिस्ट और बॉटनिस्ट की काम सबसे ज्यादा था. तो उन लोगों ने इस गाइडलाइन बनाया. उस गाइडलाइन को गवर्नमेंट ने नोटिफाई करवाया. आज के डेट पे हमारे पास 189 क्रॉप स्पीसीज की यूएसएस बोटानिकल डिस्क्रिप्टर गाइडलाइन बने हुए हैं. जब ये क्रॉप नोटिफाई होती है तब हम एप्लीकेशन एक्सेप्ट करते हैं. एप्लीकेशन एक्सेप्ट करने के बाद हमारे एक यूनिट है जहां पे ये एप्लीकेशन को एग्जामिन होती है. उसके सॉफ्टवेयर डेटाबेस में उसका एग्जामिनेशन होते हैं. उसके बाद अगर एप्लीकेशन एक लीगल प्रोसीज्योर है जिनमें से कई सारी चीज आपको जमा करना होता है. अगर वो सब देखा जाएगा देन वी विल एक्सेप्ट दी application, and then there will be a field test to be conducted. So this is different from a patent filing. In the patent filing, you have a software database, you describe the technology, and if the technology is, you have any idea what about how to look after the patent? If it is novel, if it is non-obvious, and has an industrial application, patent will be granted. But in our case, we have to test that crop in the field, and then we have lots of varieties to compare with. This is called DUS test, distinctiveness, uniformity, and stability test. CMAP is a center, NBRI is also a center. CMAP is a center for medicinal and aromatic plants. NBRI is a center for canna and gladiolus, and I hope there will be a few more cross species will be identified where the DUS test guidelines will be developed by these two CSIR institutes, and we may in future start the DUS testing. So we analyze this DUS data, the field data, and the field data is fine. Then we accept application. Then the registration is granted. Simultaneously, there are the varieties will be tested for 2 year or 3 year or 1 year. So these are the 189 crop species. Right now we have opened for registration, and the crops are basically that is important for your daily life. All these crop species we have already completed. So when you submit the application, then there are different forms. It will not be interesting for the young minds to look after, but maybe for the scientists, because we face a lot of difficulty whenever an application is coming to us, because many of the people are actually not aware of that. So you can see that for every application, it can only be a new variety or an extant variety or a farmer's variety. In case the application is an essentially derived variety, there is a different form. And the form has to be supplemented with a technical questionnaire where you have to submit the entire passport data on the pedigree and genealogy of that variety.
Along with that, you have to submit us certain legal documents, which is called the PV1 and the PV2. Basically, the breeders has to assign. Suppose from NBRI, you would like to apply for a chrysanthemum variety, and there are certain breeders, or let's say certain varieties in bougainvillea. So let's say Dr. Banerjee or Dr. Roy would have been the breeder, or still the breeder. So the breeders has to assign the right to the director of the NBRI, or for that medicinal plant to the director of the CMAP, and then the director of the CMAP should apply. So this is also slightly different from the patent application, where there are the inventee as well as the institute jointly applies. So after that, there are certain declaration has to be given that if you have imported this planting material, you have taken the planting material from somebody else, that you have lawfully acquired those materials. So unless and until you have made a declaration that the material is lawfully acquired, what does it mean by lawfully acquired? आप तो चुरा के भी किसी से ले सकते हैं. इससे बचने के लिए आपको देना होगा कि आप लीगल तरीके से किसी से वो जर्मप्लाज्म लिए, या आप डिक्लेयर कर रहे हैं कि मैंने CMAP से या NBRI से जर्मप्लाज्म लिए हैं, and there is an agreement between CMAP, either it is free of cost or there is a revenue sharing or whatever it is. So these are the and then again I said GERD affidavit has to be given, and if it is a GMO, आप लोगों को GMO के बारे में पता है, genetically modified organisms, क्या बताएं, जैसे आप लोगों ने BT के बारे में जानते हैं, BT कॉटन जानते हैं. अच्छा, इंसुलिन तो जानते ही होंगे. इंसुलिन तो सब लगभग बहुत सारे लोगों ने आजकल ले रहे हैं, या और भी आप लोगों ने बचपन से जैसे DPT या किसी चीज की आप लोगों ने टीका लिए हैं. These are all genetically modified organisms. So think about before you protest for against GMOs. So we all use that, right? So many of the materials are genetically modified organisms. So there are cotton varieties, there are certain other varieties. Only cotton varieties are, for certain traits, these are approved. So you have to declare that whether your material is a GMO or your material is not a GMO. If your material is GMO other than cotton, applications cannot be accepted, since Government of India doesn't permit to register or grow any of the crop varieties apart from cotton in India. And then you have to submit fees and seeds. So a different system is that a plant variety, in patent you have to describe the technology in a paper, or you have to give a drawing or something like that. But here, seed or the planting material is the essence of that technology. So this is also you have to submit. So what kind of varieties can be protected? A new variety. There is an extant variety. Also, under extant variety, there are varieties notified under the CSIR, which we were talking about during 10 minutes back about under the EICRP system. There is a multi-locational trial under ICER or in forestry. So these also the varieties which can be notified on the seed side. There are farmers varieties, and then there are common knowledge varieties which can be registered. But when you submit the application, few things you have to submit. Check that the variety should have a unique name, which we call in our parlance it is called denomination. So first of all, it should be single, distinct, and alphanumeric denomination. And if we talk about, let's say, rice, if one denomination is already registered, you cannot register the same name or denomination in rice. For example, if you have a variety called Ganga Safed in rice, so you cannot register same Ganga Safed in rice. You have to give it in a different name. But you can register Ganga Safed in wheat or in maize or something like that. Then you have to give the complete passport data, different affidavits, as I said, all applicable fees and so on and so forth. So the registration is normally given in India right now for trees and vines. आप लोगों को पता है trees and vines क्या है? Trees तो पता होंगे, हम देखे होंगे आपने. Vines, अंगूर एक वाइन. तो उसके लिए जो प्रोटेक्शन है वो 18 साल के लिए है. जब आप विदेश जाएंगे वो 25 साल के लिए है, या कुछ जगह पे 30 साल के लिए प्रोटेक्शन दिया जाता है. इसके अलावा जितनी क्रॉप है जिसकी बीज लगाया जाता है, जैसे धान हो गया, गेहूं हो गया, बीज लगाया जाता है, उसके हम लोग 15 साल की प्रोटेक्शन देते हैं.
तो ये इसका मतलब है जब आप एक वैरायटी रजिस्टर कराते हैं, अगर वो अंगूर है तो 18 साल के लिए भारत में प्रोटेक्शन मिलेगा, या वो धान है तो आपको 15 साल के लिए प्रोटेक्शन मिलेगा। बट टू क्वालिफाई फॉर रजिस्ट्रेशन a variety has to comply with the DUS. They said the DUS is normally a field based test. जैसे आप देखेंगे कि धान को लगाया जाता है, गेहूं को लगाया जाता है, तो इसका टेस्टिंग भी फील्ड में लगाया जाएगा। इसकी कुछ कैरेक्टर ऑब्वियसली आप लैब में जांच कर सकते हैं, कुछ केमिकल कैरेक्टर्स है, कुछ बायोकेमिकल ट्रेट है, या इन फ्यूचर में भी डीएनए ट्रेट्स होंगे जो आप लैब में कर सकते हैं, बट प्राइमरीली आपको फील्ड में करना है। और कैसे करना है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए गेहूं, अब मुझे नहीं पता है यहाँ पे गेहूं कितने लोगों ने उगते हुए देखे हैं, बट देखिए मैंने आपको बोला कि जब आप गेहूं की एक एप्लीकेशन आप सबमिट करेंगे, आपको बीज देना होगा। तो हमारे लिए गेहूं के लिए 2 या 3 सेंटर है। एक है करनाल में, वन सेंटर इज एट इंदौर एंड अनदर सेंटर इज एट धारवाड़। डिफरेंट गेहूं के लिए जो आप लोगों ने शाम को मामा को बोलते हैं कि पास्ता खाना है, वो एक डिफरेंट टाइप की गेहूं। जब रोटी खाना है, मामा ने बोला है नहीं पास्ता नहीं खाना, रोटी खाना है, वो एक डिफरेंट टाइप की गेहूं। तो ये जो डिफरेंट गेहूं है, ये डिफरेंट एरियाज में उगाया जाता है और इसकी टेस्टिंग भी डिफरेंट जगह पे होती है। तो आप देखेंगे जब हम बीज भेजते हैं तो वो लैब में बीज के जर्मिनेशन टेस्ट लगा देंगे, उसके बाद उसको मशीन के जरिए सोइंग कराते हैं। इसके बाद इसकी वो ग्रो होते हैं। अब वो ग्रो करने के टाइम पे उसके डिफरेंट स्टेजेस आते हैं। उस स्टेज में जो साइंटिस्ट हमारे वहां पे है, जो टेक्निकल स्टाफ है, वो उसके रिकॉर्ड करते हैं, स्टेजेस रिकॉर्ड करते हैं। आप देखेंगे जो थर्ड वाली फोटोग्राफ है, प्लांट ग्रोथ हैबिट, मतलब एक गेहूं की बीज अगर आप जमीन में लगाए वो कैसे ग्रो करेंगे। अब वो ग्रो करने के 3 जो है उसमें हम लोगों ने उसको 3 कैरेक्टर में डिवाइड किया। एक कहते हैं इरेक्टेंट जैसे हम खड़े हैं, एक कहते हैं सेमी इरेक्ट, एक हल्के से गिर गए, और ऐसे जैसे स्प्रेडिंग है। नॉर्मल स्प्रेडिंग वाले ट्रेडिशनल वेराइटीज में मिलते होंगे या लैंड रेसेस में मिलते होंगे, बट आजकल सारे के सारे ये खाड़ा टाइप की या इरेक्ट या सेमी इरेक्ट ऐसे करके गेहूं में अबाउट 36, 37, 38 ट्रेड्स है। आप देखेंगे फोलेज कलर क्या है, गेहूं में जब आपको दाना आते हैं उसके रंग क्या है, बीजों की रंग क्या है, ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स जो है साइंटिस्ट स्टेजेस में, डिफरेंट स्टेजेस में रिकॉर्ड करते हैं। तो कैसे रिकॉर्ड करते हैं आप जानते होंगे, जैसे मैंने बोला साइंटिस्ट रिकॉर्ड करेंगे तो ये वो क्या करेंगे, 3 प्लॉट लगाएंगे, और एक वैरायटी तो नहीं, कई सारे वैरायटी उगाया जाएगा। उसमें अगर 10 वैरायटी उगाया जाएगा तो उसके छोटे छोटे प्लॉट वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट करके उसमें से रिकॉर्ड करते हैं। ये इसको हम कहते हैं DUS ट्रैक, डिस्टिंक्टिवनेस, यूनिफॉर्मिटी एंड स्टेबिलिटी ट्रैक। को पता है? दैट्स गुड। सो अब हमें देखना है, जब एक वैरायटी की एप्लीकेशन आपने भेजा है और वो हमें देखना है कि वो दूसरे वैरायटी से अलग कैसे है। और हमारे यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि बोटानिकल डिस्क्रिप्टर में उसमें डिफरेंसेस आपको देखना है। जैसे कुछ बोटानिकल डिस्क्रिप्शन हमने दिखाया, ये नीचे आप देखेंगे कि जो लीफ दिखा रहे हैं ये किसका पत्ते हो सकते हैं। एक और, हाँ राइट, मस्टर्ड की लीफ है, सरसों की लीफ है। आप देखेंगे उसमें छोटे छोटे पत्तियां नजर आती है। जब आप बड़े होकर बॉटनी पढ़ेंगे प्लस 2 या ग्रेजुएशन में, तो आप देखेंगे ये एक लीफ है जिसमें छोटे छोटे पत्तियां, इसको कंपाउंड लीफ में नंबर ऑफ लोब्स कहते हैं। कितने नंबर ऑफ लोब्स है एक वैरायटी में, कितने नंबर ऑफ लोब्स है जिस वैरायटी की हमने टेस्ट किया, या दूसरे वैरायटीज में जो चेक वैरायटी है या एग्जाम्पल वैरायटीज है उसमें कितने नंबर ऑफ लोब्स है। इसके अलावा आप देखेंगे वो ऊपर में पाल्म मिलेट यहाँ पे नहीं उगता है तो इसीलिए नहीं पता होगा, उसके जो पत्ते आप देख रहे हैं जहाँ पे बीज बनते हैं उसको स्पाइक कहते हैं, पाल्म मिलेट, राइट। तो उसके जो पत्ते ग्रीन कलर की दिख रही है वो उसका इमर्जेंस कैसे आई है। तो पात वाले जो है वो पार्शियल है, कुछ कंप्लीट है। इसके अलावा आजकल जो ये 160, 180 या 200 रुपए किलो वाले जो सब्जियां उग रही है या जो मार्केट में बिक रहे हैं उसकी फोटो मैंने लगाए है ना। तो कुछ दिन पहले ये 60-70 रुपए में था, थोड़ी सी महंगी हो गई है, काफी ज्यादा महंगी हो गई है। तो अब आप देखेंगे उसमें फूल भी दिखाया मैंने और
वो फ्लावर की अरेंजमेंट है, उसके टर्मिनल शूट्स है, उसमें फ्लावर की अरेंजमेंट है। और उस फ्लावर में आपको बाद में जब फ्रूट्स बनते हैं तो फ्रूट्स के जो अरेंजमेंट है, इन्फ्लोरेसेंस टाइप पहले आपने देखे हैं और फ्रूट की अरेंजमेंट देख के उसकी कैरेक्टर्स को नोट किया जाता है। सो दीज आर यूएस डिस्क्रिप्टर्स। इसको अगर हम सहज तरीके से देखें, ये भी आजकल महंगा चल रहा है आपको, है ना। अब देखेंगे आपके पास 8 एप्पल के फोटोग्राफ है। अब हिमाचल में गए या उत्तरांचल में गए, कहीं पे भी कुल्लू मनाली गए हैं, आज की डेट पे अभी मत जाना, अभी तो रास्ता खराब है, लेकिन यही टाइम है जहाँ पे अभी आप जाएंगे तो आपको एप्पल पौधे मिलेंगे। अब देखेंगे छोटे छोटे बच्चे, ये एप्पल सारे पौधे में लगे हुए हैं। कोई बोलेंगे लाल एप्पल खाना है, कोई बोलेंगे ग्रीन एप्पल खाना है, कोई बोलेंगे येलो एप्पल खाना है। अब आपको देख के सारे एप्पल की पेड़ सेम नजर आएगा, लेकिन उसके अंदर जो फल फले हुए होंगे ना जो एप्पल की, वो आप देखेंगे उसके ऊपर स्किन की कलर है, हम लोग बोटानिकली इसको ओवर कलर कहते हैं। ये 8 डिफरेंट है। तो अगर वो पौधे जो एप्पल के वैरायटीज या पौधे लगे हुए हैं, सारे के सारे कैरेक्टर सेम है, लेकिन 8 डिफरेंट पौधे में 8 डिफरेंट फ्रूट्स बने हुए हैं, डिफरेंट टाइप की फ्रूट्स बने हुए हैं, तो फिर वो 8 डिफरेंट वैरायटीज है। इनमें से कुछ कॉम्प्लेक्सिटी तो है ही है, जैसे आप देखेंगे साइनिसाइड है, नॉन साइनिसाइड है, उसमें एंथोसायनिन कलरेशन की डेवलपमेंट, वो साइंटिस्ट ज्यादा जानते हैं, मैं भी नहीं जानता ये सब चीज के बारे में। तो ये पहले डिस्टिंक्टनेस दिखाते हैं, फिर आपको देखना होगा पौधे तो डिस्टिंक्ट हो गया है, लेकिन आज मैंने गोमती नगर में लगाया और काल मैंने बाराबंकी में लगाया, बाराबंकी में उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आएगी, तो ऐसे वैरायटी उगाने से क्या फायदा है उसकी। तो हमें 2-3 जगह पे लगा के देखना होगा कि उसके जो परफॉर्मेंस है वो दोनों जगह पे या डिफरेंट लोकेशन में, तभी तो फार्मर को फायदा हो। डिफरेंट लोकेशन में जाके उसकी परफॉर्मेंस अच्छे हैं या नहीं है, तो इसीलिए उसकी यूनिफॉर्मिटी दिखाते हैं और यूनिफॉर्मिटी के बाद स्टेबिलिटी दिखाया जाता है। तो ये जो DOS के बारे में हमने बोला, ऐसे हमने भारत में 155 सेंटर स्थापित किए हैं। अब देखेंगे ऑल अक्रॉस इंडिया। इसके अलावा हमारे पास 2 फील्ड जीन बैंक भी है। जैसे हमने बोला आपको ट्री की पौधे, अब जैसे आज अगर आम लगाएंगे और उसमें फल फलने में 5 साल लग जाते हैं, तो 5 साल तक तो ये टेस्टिंग नहीं होने वाला है। तो हम क्या करते हैं इसके लिए कि जिन्होंने एप्लीकेशन भेजा है, हम उनके खेत में जाते हैं उसके सारे कैरेक्टर्स को रिकॉर्ड करने के लिए, तो उसको हम कहते हैं ऑन साइट टेस्टिंग। अब वो जो जब सबमिट करेंगे उसकी प्लांटिंग मटेरियल हम लोग यहाँ पे फील्ड जीन बैंक में रखेंगे। अदरवाइज जैसे मैंने बोला धान हो या गेहूं हो या मेज हो गया है, इसके बीच एक हमारे जीन बैंक जिसको नेशनल जीन बैंक कहते हैं वहां पे रखा हुआ, जिसको मैं देखभाल करता हूँ। हमारे पास आज के डेट पे उसका लगभग 15-20 हजार कलेक्शन पड़े हुए हैं जिसमें वैरायटी की रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो हमारे पास 155 टेस्ट सेंटर्स है इंक्लूडिंग CMAP and NBRI at Lucknow as well as all across. I have shown you the wheat DOS centers. अब क्या है कि बीज जो है वो जीन बैंक में रखते जीन बैंक में हम 4 डिग्री में या -20 में रखते हैं, डिपेंड करता है कि कौन सी क्रॉप स्पीसीज है। इसकी जो वायबिलिटी है थोड़ी सी खत्म हो जाती है ओवर द इयर्स, दैट्स अ जेनेटिक nature. So we also do a little bit of varietal rejuvenation. Let us not go into detail of that. So जब ये variety की testing हो जाती है, हमारे एक procedure है that we publish this passport data in one of our journal which is called Plant Variety Journal of India. Similarly as patent, so the breeding history, the photograph, the characters, the applicant name are always there and it stays there for 90 days. So that general public says that what application and which application we have received, what are the characters, and whether this is a unique variety or this is actually an existing variety, maybe bred by you, which she has applied. That also can be a chance. So you are from Lucknow, I can apply it from West Bengal. You will never know. But this is one thing where we publish our passport data, and then the public, it is digitally published, so the people can also see the photograph and can check whether this is their varieties or not. So if there is no opposition received within 90 days, then we give the certificate. So this is the form of a certificate. Let's give that. So I believe you understand. I have tried to make you understand how testing has been done.
I know it's a very difficult thing, but for other side of the story, there are certain, provisions of this act, which is called benefit sharing. So the benefit sharing ऐसे है कि suppose if you have applied and got a registration for a plant variety, for which you have taken a planting material, maybe from a farmer or from a different organization. So the provision for benefit sharing, legally, you have to share certain amount of benefit that party from where you have taken the material or germplasm. So depending upon the nature and extent of the genetic material, we will decide the amount of benefit sharing which is there in the under section 26. The breeder's rights. When when you register a plant variety, you will get a certain amount of right of that. Similarly, as patent, the breeder can sell that variety. Breeder also can assign his right. So you are an innovator, you are a breeder, but you do not want to market it. Like for example, let's say the public sector system doesn't have the mechanism to commercialize each and everything. So many a times there is an intermediary who commercialize those things. These are assignees. So you can assign your right to somebody else who can, be your agent or a licensee to sell that market. So to produce that, a lot of big companies are having their licenses. Those who are producing these materials right now, they do not do the production at all on them. Apple doesn't produce the phone by themselves. It has been done by Foxconn. That's the easiest and the cheapest way to earn $3 billion of profit every year. So you can assign these rights to produce, sell, market, distribute, import, export of that variety. You can even authorize these rights to somebody else. And when you apply, till the time of protection. So there is a lead between the time of application and till the time of protection, because you apply, then we'll examine that application and then we'll go for a testing. It will take 2 years or 3 years. So within this time, if somebody infringes your right, किसी ने आपकी वैरायटी दूसरे नाम से बेचना शुरू कर दिए, तो you have a provisional protection, provided that your variety ultimately succeeds in getting the PVP right. So you can get a provisional protection. So these are breeders' rights. This is the same as UPOV. This is an important aspect which is called a researcher right. The Plant Variety Protection Act is a positive right, whereas we call the patent is a negative right. You understand? I believe the scientists will be understand. तो आप जब एक पेटेंट लेते हैं तो आपके बिना परमिशन के अलावा किसी ने उसकी इस्तेमाल नहीं कर सकते. ऑफ कोर्स इन हाउस इस्तेमाल कर सकते हैं, कमर्शियलाइजेशन नहीं कर सकते. बट प्लांट वैरायटी प्रोटेक्शन एक्ट जो है ये सिर्फ भारत में नहीं है, पृथ्वी की सब जगह पे है कि एग्रीकल्चर हमारे सिविलाइजेशन की बेडरॉक है. अगर एग्रीकल्चर नहीं होते इतने लोग यहाँ पे नहीं होते और हम बचते नहीं. तो इसीलिए और उसके मेन जो बेडरॉक है वो प्लांट वैरायटीज है. अगर हम प्लांट वैरायटीज को प्रोटेक्ट करें और हम बोलेंगे भाई आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं या आप इसको इस्तेमाल करके नई वैरायटी नहीं बना सकते हैं, तो आपको हर बार नए नए वैरायटीज चाहिए, नए नए मटेरियल चाहिए बनाने के लिए, विच इज वेरी डिफिकल्ट. दिस इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल. इसीलिए देयर इज अ प्रोविजन फॉर अ रिसर्चर राइट. सो इवन इफ यू रजिस्टर अ वैरायटी, you can use that variety for research. You can create a variation out of that variety, produce a new variety. What you cannot do is, आप लोग शायद नहीं जानते होंगे, hybrid variety they all know, right? So in hybrid variety you require a male parent and a female parent every time to produce a new variety, right? Okay? Good. So if you have registered a variety and you are using a parent which is a registered parent for producing a hybrid variety, that you cannot do. You have to take a permission from the original breeder. So these are the researcher rights. So there is a provision convention country. India can sign a convention. Along with that, there are provisions for infringement. There are also deceptive similarity. For example, I said Apple. Apple को APPLE है और APLE. आप दूसरे नाम से भी इसको प्रोनाउंसिएट कर सकते हैं. दोनों की मीनिंग आम आदमी को लगेगा कि वो सिमिलर है और वो मार्केट में दोनों लगा देंगे. आप अगर
उसके लोगो भी सिमिलर लगा देंगे तो आपको लगेगा कि भैया ये एप्पल तो 1 लाख रुपया की है, बट ये जो एप्पल हमें दे रहा है ये 20-25 हजार की है और हम ये खरीद लें, तो वो आपको ठकाने वाली काम बेसिकली। इसीलिए बहुत सारे लोग ऐसे करते भी है, जो वैरायटी मार्केट में पॉपुलर हो गया है उसके सिमिलर नाम देके दूसरे वैरायटी मार्केट में छोड़ देती है कि फार्मर को तो पता है हरियाणा में ये जो है व्हीट वैरायटी बहुत पॉपुलर है, तो यहाँ पे भी बिक रही है, वो एक्चुअली वो पर्टिकुलर वैरायटी नहीं है, उसी नाम से उसको मार्केट में बेचना शुरू कर दी। तो इसके लिए भी अगेंस्ट में एक प्रोविजन हम लोगों ने रखा है, इसमें पेनल्टी है। अब इसमें आपको 2.5 लाख रुपया तक भी पेनल्टी है और 3 साल तक जेल भी हो सकते हैं। तब ऐसा है कि किसी का हुआ नहीं है, देखते हैं किसका होता है, ये भी नहीं कह सकते कि किसी का होगा नहीं, ऐसे कंप्लेंट हमारे पास आए भी नहीं है, तो बहुत बड़ा है और हम लोग सिर्फ 20 आदमी है दिल्ली, तो इट्स नॉट पॉसिबल। दैट्स व्हाई मैम थैंकफुली वी आर ट्राइंग टू क्रिएट एन अवेयरनेस अमंग द जनरल पीपल। We normally create awareness through the NARS, but there is a large world beyond NARS, which is the scientific other side of the scientific communities. So thankfully this the chances are very. So how we can benefit from plant variety protection? So I'll try to give you certain amount of examples. So Dr. Prasad is not there, right? Isn't it? So his institute, the previous institute, IRI, are registering a lot of varieties. The Indian Agricultural Research Institute, which is at New Delhi. Okay. So they are working on several crops like rice, wheat, so on and so forth. So they have recently in January they have generated a new variety which is herbicide tolerant. And again, this is a non-GMO herbicide tolerant. It is generated from a mutant from a South Indian variety. So these varieties are now being licensed. I don't want to tell each and everything to before everybody. Since I look after rice, so I know that the case of this rice. So there are several varieties of breeding lines are being licensed to private companies. As I said, that many of the public sector organizations doesn't have, or it is also good if you identify something big varieties, good varieties, because you have a lot of germplasm resources, so you can source it, you can license it to a private companies which has rich network for marketing, and you can get a license fee. So this is one of the positive aspect of how plant variety protections have been doing well. So ICAR has given about 1,000 licenses, 1,050 licenses in last 5-6 years, which are from 24 institutes covering 19 states, out of which the maize, rice, sorghum, wheat, flowers, fruits. So these are the plant varieties which are being licensed to different companies. Sometimes exclusive licenses are given, sometimes non-exclusive licenses are given. So I believe that your institute is also, the CSIR is doing it, we know. So historically also, the other countries are also doing this kind of thing. So this is all about plant variety. So at this moment, how much time do you have, sir? 10 minutes, right? Thank you. Any question? Okay, so let us go to the second part. So as I said, our act is having. Yes, ma'am. So as I said that now our act has plant variety protection as well as make a combination with the farmer right. Now this is a very difficult one because this is a societal right, whereas it is sometimes it is an individual right, sometimes it is a community right. Whereas the plant variety protection is basically an individual right. Okay. So this is a societal benefit out of plant variety protection. And it is very difficult to make you understand what benefit we accrue it. The time has also not yet ripened to recognize the entire farmers' rights till today. The act, yes. Please use this. Sir, my name is Satyanshu Pandey from Kendriya Vidyalaya Bhumdinagar of class 8.
So my question is that what is varietal regeneration? Yes, so as I said कि आप लखनऊ में पालो क्वेश्चन, लखनऊ में बड़े हुए या आपके दादा परदादा कोई गांव में रहते? अच्छा, टू बी मेक यू अंडरस्टैंड, आप घर में बीज रखिए, ठीक है। अब क्या होता है कि ओवर टाइम उस बीज की जो जर्मिनेशन कैपेसिटी जर्मिनेशन समझते हैं, जब बीज को उगाने की मेरी हिंदी जानना अच्छा नहीं, सॉरी, अंकुरण, तो अंकुरण की जो क्षमता है ना वो कम हो जाती है, ठीक है। अब बीज हम रखते हैं कहाँ पे? हम घर में तो रखते हैं, लेकिन यहाँ पे हम फ्रिज जैसे कंडीशन मेंटेन करके हमारे जीन बैंक में रखते हैं। फिर भी इसके अंदर एक जेनेटिक्स है कि ओवर द इयर्स आप अगर आप ठीक ढंग से नहीं रखेंगे या उसका मॉइस्चर इनिशियली ठीक नहीं था या कुछ ऐसे बीज है जिसमें ऑयल कंटेंट है, उसके जो जर्मिनेशन वायबिलिटी जो कंटेंट होते हैं वो ओवर द इयर्स कम होते जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज पूछा है, इसके संदर्भ में मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो हम वैरायटी के बीज हमने रखे हैं किस लिए रखे पता है? एक चीज मैंने बोला कंपल्सरी लाइसेंसिंग, जो कि ना एक इम्पोर्टेंट चीज है। एक जो हमारे जो बीज जीन बैंक में रखा हुआ है वो उस टेक्नोलॉजी की प्रमाण है, हाँ वही वैरायटी है, राइट। अब अगर मान लीजिए ऐसा है कि एक कंपनी ने उसको रजिस्टर कर दिया, लेकिन कंपनी को पता चला कि इस बीज की बहुत अच्छी डिमांड है मार्केट, क्या करेगा वो? सबसे पहले गुड, दूसरे मे बी सर लॉन्च करेगा कि वो सर उसको सर नॉर्मली क्या कर रहा है? पहला चीज आपने ठीक बोला है कि उसकी प्राइस को बढ़ा देगा, तो कल जो 70 रुपया के बीज है वो परसों जो है 140 रुपया किलो बीज को बढ़ा देगा दाम। साइमल्टेनियसली वो ये भी करता है कि पिछले साल बैठेंगे, पिछले साल में 200 किलो बीज उगाया, इस बार क्या करेगा? 100 किलो ही उगा के रखेगा मार्केट में, सो दैट कि दोनों तरीके से उसके आर्टिफिशियल डिमांड बढ़ जाए। अब आप देखिए एक सामान्य किसान पिछले साल वो 70 रुपया किलो बीज खरीद रहा था, मार्केट में गए तो मिल गया था उसको। आज वो डीलर के पास जाएगा, डीलर बोलते नहीं रात को आइए, अभी तो बीज नहीं है हमारे पास, ठीक है रात को आएंगे आपको हम दे देंगे। वो रात को गए, बोले देखो भाई 70 रुपया किलो तो मैं आपको नहीं दे सकता, तो मैं सिर्फ 20 किलो ही दूंगा, लेकिन 200 रुपये, अगर उसको उगाना है तो 200 रुपये देगा वो, ब्लैक मार्केटिंग हो गया ना। इसको रोकने के लिए हमारे यहाँ पे प्रोविजन है जिसको कहते हैं कंपल्सरी लाइसेंसिंग। हमारे पास, मेरे पास जो जीन बैंक में बीज पड़े हुए हैं, उसके पेरेंट हो, हाइब्रिड हो, किसी भी बीज का, हम अगर उसके अंकुरण की क्षमता ठीक ठाक है तो वो बीज हम दूसरे पार्टी को दे सकते हैं, जिससे वो नए वैरायटी उगाया जा सकता है, सेम वैरायटी उगाया सकता है। अभी हमारे पास केस नहीं है, ऐसा हुआ नहीं है, बट मेडिसिन में हुआ है। एक कैंसर ड्रग्स है, कैंसर ड्रग है जो एक इंडिया में, भारत में एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ पीपल के लिए वो कैंसर ड्रग बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी है, ब्रिस्टल मायर्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सो ब्रिस्टल मायर्स, सो वो कैंसर ड्रग उन्होंने बहुत महंगा बेचना शुरू कर दिया, क्योंकि ना आम आदमी इसको गवर्नमेंट की सब्सिडी के बाद भी अफोर्ड नहीं कर पा रहा। तो जो इंडिया के जो ड्रग मैन्युफैक्चरर है उन्होंने गवर्नमेंट को बोला कि इसकी कंपल्सरी लाइसेंसिंग करवाया जाए, दैट कि आम आदमी को बेनिफिट। तो एक लीगल प्रोसेस के जरिए गया है, उन्होंने ऑब्वियसली उसको एक्सेप्ट नहीं किया, उन्होंने इसको कॉन्टेस्ट किया, कोर्ट तक भी गए, बट अल्टीमेटली पेटेंट ऑफिस जीता, बोला है कि इसकी कंपल्सरी लाइसेंसिंग। तो आज की डेट में उसके भी जो ड्रग्स की जो दाम है वो काफी कम होगा, जो मेरे को अभी याद नहीं है, बट वो मेरे ख्याल से कुछ हद तक की शायद 1 लाख रुपया उनके पर ईयर का या पर महीने की ट्रीटमेंट की कॉस्ट आया था, जो कि ना आज के रेट पे काफी कम। तो ये एक प्रोसीजर है। हम क्या करते हैं, जो हमें पता है कि बीज हमारे पुराने होते जा रहे हैं, उसके अंकुरण की क्षमता कम होते जा रहा है, तो हम जीन बैंक से निकाल के उसको बाहर लगाते हैं और उसको नए तरीके से एक नया पौधे बनाता है, जिसपे फ्रेश शीट बनते हैं, जिसके अंकुरण की क्षमता फिर वो 100% आ जाता है। इसीलिए हमने उसको रखा, इसको रिजुवेनेशन बोलते हैं, राइट।
मैंने कोशिश की आपको समझाने के लिए। तो आप देखेंगे ये फार्मर्स राइट्स है, इसमें रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मर्स वैरायटीज है, तो इसके अलावा कम्युनिटी राइट है, एक्सेस टू सीड जो हम पैसे के बारे में बोल रहे हैं, एक्सेस टू सीड है, फार्मर ऑल्सो प्रोटेक्टेड फ्रॉम इनोसेंट इन्फ्रिंजमेंट। क्या है कि ब्रीडर्स राइट, जैसे मैंने बोला, इंडिविजुअल राइट है, विदेश में ये बहुत स्ट्रिक्ट है। कोई फार्मर ने अगर एक प्लांट वैरायटी प्रोटेक्टेड वैरायटीज को सीड खरीदा और अगले साल उसी बीज से दूसरा लगा दिए और कंपनी को पैसा नहीं दिया, तो कंपनी उसको जेल मतलब कोर्ट में तो ले ही जाएगा, पर अगर वो बहुत बड़ा फार्मर है तो उसके ऊपर कंपनी जो है वो आपको ये भी कर देते हैं, पेनल्टी भी लगा देते हैं। बट हमारे यहाँ पे प्रोविजन है कि फार्मर को हम बोलते हैं, क्योंकि हमारे देश बहुत बड़ा है, कोने कोने पे फार्मर बैठे हैं। आपको पता है आप लोगों को कि देश में कितने गांव हैं? 6 लाख। तो अब ये देखिए कि हर एक गांव तक तो ये सब चीज पहुंचना बड़ा मुश्किल है ना। इसकी जानकारी देना भी बहुत बड़ा मुश्किल है। तो किसी फार्मर ने वो बीज खरीदा और बीज खरीदने के बाद इस साल लगाया और लगाने के बाद उसमें से बीज जो पैदा किया है उसको अगले साल लगाया और कंपनी बोले भाई तुम आओ, तुम्हारे हमारे मुलाकात होगा कोर्ट में और कोर्ट जो डिसाइड करेगा तो उसमें आपको पेनल्टी देना। हमारे एक्ट कहता है किसान को अगर ये चीज नहीं पता था इस राइट के बारे में तो उसको इनोसेंट इन्फ्रिंजमेंट के दायरे पे रख के उसको पहली बार हम बड़ी कर सकते हैं, पहली बार, हर बार नहीं। तो ये प्रोविजन दिया गया है। इसके अलावा कंपेंसेशन है, जो बीज आपने खरीदे हैं वो आपने लगाया है और उससे पैदावार नहीं हुआ, जो कंपनी ने बोला कि इसमें 10 टन धान आएगा उसमें आया नहीं है, 3-4 टन आया, तो आप कंपेंसेशन के लिए गुहार कर सकते हैं। इसके अलावा कंपल्सरी लाइसेंसिंग के बारे में हमने ऑलरेडी कहा। एग्जेम्पशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन फीस फॉर फार्म, जैसे बोला कि कोई नई वैरायटी के लिए जब आप रजिस्टर करेंगे आपको कुछ फीस देना होगा, टेस्टिंग फीस है, रजिस्ट्रेशन फी है। तो फार्मर के लिए कोई फीस नहीं है, सारे फी मौकूफ है। जैसे आप राइस की एक वैरायटी लगाना चाहते हैं, राइस की वैरायटी रजिस्टर कराना चाहते हैं तो उसके 30-35 हजार रुपया आपको खर्चा है टेस्टिंग के लिए। इसके अलावा मान लीजिए आप प्राइवेट से है तो आपको 50,000 रुपया आपको देना होगा। वैरायटी रजिस्ट्रेशन के बाद भी आपको रिन्यूअल फी, एनुअल फी ये सब देना होता है। तो फार्मर के लिए ये सब फीस देने की कोई जरूरत नहीं है, ये फ्री है। इसके अलावा बेनिफिट शेयरिंग भी है और एक इंपॉर्टेंट चीज है जो फार्मर की रिकॉग्निशन और रिवार्ड है। अब देखेंगे लगभग सारे भारत से हमें डिफरेंट वैरायटीज की एप्लीकेशंस लगभग हमारे पास आए हुए हैं। इसमें अब ये आप अगर देखेंगे ये डिफरेंट स्टेट से हमारे पास कितने एप्लीकेशंस आई है, कितने वैरायटी रजिस्टर हुआ है। ये उत्तर प्रदेश से हमारे पास इस क्रॉप में बार्ले, तो ब्लैक ग्राम है, ब्रिंजल है, ड्यूरम व्हीट है, ड्यूरम व्हीट जिससे पास्ता या ब्रेड बिस्किट्स बनते हैं, उसके भी एप्लीकेशंस आए हैं हमारे पास। लिंसीड है, तीसी जिसको कहते हैं, आम है, यही आपका मलिहाबाद करके एक जगह है जहाँ के दशहरी बड़ा फेमस है। तो मलिहाबाद में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिन लोगों ने दशहरी की कई सारी किस्में संरक्षण की है। तो उन्होंने कुछ वैरायटीज उसके दशहरी के अलावा भी कुछ वैरायटीज हमारे यहाँ पे रजिस्टर करवाया है। और आपको जानकारी खुशी होगी, उस संस्था की जो प्रधान है उनको पद्मश्री भी मिला है कुछ साल पहले। हाँ मे भी नाम याद नहीं आ रहा था सर। तो इसके अलावा ये सब यूपी से मिला है ये सब चीज। तो अभी जो मैं जिसके बारे में कहना ये चाह रहा था कि हमारे यहाँ पे एक नेशनल जिन फंड सरकार ने बनाया है। इस नेशनल जिन फंड की जो उद्देश्य है ये है कि आप देखेंगे कि जो जिनोम फार्मर को जिनोम से भी अवार्ड देना, पंचायत की स्तर पे प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस के लिए जीन बैंक बनाना या उसके कंजर्वेशन के लिए लोगों को हेल्प करना, बेनिफिट शेयरिंग या कंपेंसेशन। इसके लिए जो पैसा आता है वो प्राइमरली सरकार ने शुरुआत में सरकार ने गिफ्ट किया। इसके बाद आज के डेट पे हमारे यहाँ पे जो वैरायटीज की रजिस्ट्रेशन बन रही है वो सबकी एनुअल फीस इस जिन फंड में आते हैं। इसके अलावा बेनिफिट शेयरिंग भी आते हैं या कंपेंसेशन अमाउंट आते हैं। और इससे जो है हम लोग एक किटी बनाए। उस किटी बनाने से पहले
हम लोगों ने एक काम किया जिससे NBRI जुट है इस काम के लिए। हमने आपको कहा कि एग्रो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हमने आइडेंटिफाई किया। आपके यहाँ पे एक साइंटिस्ट थे डॉक्टर के नारायणन नायर, जिनके साथ हम लोग मिलके ऑफ कोर्स बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी थे, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज भी थे। तो हम लोगों ने 2008-9 में एग्रो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट को आइडेंटिफाई किया ऑल अक्रॉस इंडिया। इसका मीनिंग यही है, आप देखेंगे इसमें 22 एग्रो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स है और उसका जो कलर किया हुआ है वो रीजियंस है। तो उस जगह पे जो माइक्रो हॉटस्पॉट्स है, हॉटस्पॉट्स का मतलब ये है कि कोई भी एक क्रॉप का मैक्सिमम डाइवर्सिटी उस जगह पे दिखा गया है या उसके प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस जो है वो इंडिया में उस जगह पे आपको मिलते हैं। इसको हमने आइडेंटिफाई किया, जहां से हमारे पास एप्लीकेशंस आते हैं जीनोम सेवियर अवार्ड की। ये मैं नॉर्थ ईस्ट जाना था जोरहाट, तो उन लोगों के लिए बना है, व्हाटएवर इट इज। तो इससे हमने एक अवार्ड देना शुरू किए हैं, प्लांट जीनोम सेवियर कम्युनिटी अवार्ड या प्लांट जीनोम फार्मर अवार्ड या प्लांट जीनोम सेवियर फार्मर रिकॉग्निशन अवार्ड। इस साल की एडवर्टाइजमेंट हो चुका है और आप लोग अगर किसी कम्युनिटी को, किसी इंडिविजुअल फार्मर को मेंटर करना चाहते हैं एप्लीकेशन के जरिए, तो मेरी गुजारिश है आप लोगों से, इंस्टीट्यूट, दोनों इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर बैठे हैं, आप लोग अगर जैसे इससे पहले जो सोसाइटीज मैंने बोला जिनके नाम उन्होंने बोला है, उन लोगों को हम लोगों ने 10 लाख की कम्युनिटी अवार्ड दिया है। और उसके अवार्ड सिंपली इंस्टीट्यूट ऑफ सबट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर जो रहमान खेरा में है, उनके डायरेक्टर डॉक्टर एस.आर. राजन थे, उन लोगों ने मेंटर किए थे उनको। इसके अलावा भी कई सारे एप्लीकेशंस और फार्मर की अवार्ड दिया गया है। तो आप देखेंगे स्टेट वाइज ये सिर्फ जीनोम सेवियर अवार्ड, कम्युनिटी अवार्ड की हमने दी है। तो अभी तक यूपी से सिर्फ एक ही वो कम्युनिटी है जिनको 10 लाख की अवार्ड दिया गया है या मिला है, आप देखेंगे। इसके अवार्ड की एक प्रक्रिया है जो अभी चल रहे थे, जिसमें प्रोफेसर साहनी कुछ दिन पहले 6 तारीख को जो मेंबर है उस कमेटी की अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर आर.पी. सिंह, तो उसमें से हम लोगों ने कुछ कम्युनिटीज को आइडेंटिफाई किया और उम्मीद है इस बार, नॉर्मली हर साल ऑनरेबल एग्रीकल्चर मिनिस्टर के हाथ से ये अवार्ड दिया जाता है। इस बार देखते हैं और भी कोई बड़े आदमी अगर आए पधारे और उनको इन लोगों को अवार्ड दे। तो हमारे कुछ प्रोग्राम होने वाला है सितंबर में, एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है जिसमें हम लोगों ने सोच रहे हैं कि इस अवार्ड को दिया जाए, जो भी कम्युनिटीज आप लोगों ने आइडेंटिफाई किया उस दिन को। तो ऐसे करके हम लोगों ने लगभग 35 कम्युनिटीज को हमने अवार्ड दिया है। और आप देखेंगे ये बाएं तरफ एक आपको जम्मू कश्मीर की एक कम्युनिटी है जिन्होंने रेड राइस मुश्क भुजी करके एक एरोमेटिक शॉर्ट ग्रेन बोल्ड रेड राइस है। अब इसकी अवार्ड की खासियत मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो मुश्क भुजी है, एक लेट्स से आप ये बोल सकते हैं कि फॉरगॉटन सीड्स और समथिंग लाइक दैट, ऐसे करके कुछ था। अब जब इन लोगों की अवार्ड मिला 2016 या 17 को, तो कई सारे न्यूज़पेपर में इनके बारे में चर्चा हुआ। जो यूनिवर्सिटी थे जम्मू कश्मीर में, जो यूनिवर्सिटी है, उन्होंने जगह जगह पे इसके चर्चा की है। इससे क्या हुआ कि लोगों से इसके रिक्वायरमेंट आना शुरू हुआ। ये जो मुश्क भुजी की हमें चावल चाहिए। अभी छोटा सा कम्युनिटी है, इनके लिए तो बड़े पैमाने पे पूरे कश्मीर वैली के लिए प्रोडक्शन करना शुरू में पॉसिबल नहीं था। हम लोगों ने इनको 10 लाख रुपया दिया था। उन्होंने ये क्या किया, उस यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर पार्टिसिपेटरी प्लांट ब्रीडिंग में उन्होंने इसकी प्रोडक्शन शुरू किया और आज के डेट पे वो कम से कम 80 लाख रुपया का सीड वो बेचना शुरू किए within 5 to 6 years. That is one of the success stories of this particular award. If you see the lower side, where Professor Swaminathan is there, is a rice variety called Govindabhog. I don't know any Bengali are there or not, apart from me. So Govindabhog is a traditionally short grain aromatic rice, and there are maybe about 10 crore Bengalis all over the world. Whenever they make the pies, kheer, they will invariably use Govindabhog at the first instance. So this award we have given it in 2012. Then the government of West Bengal took an initiative. They were making a brand, Vishwabangla. If you go to Calcutta airport, you'll see that there is an outlet for Vishwabangla. So they make, all the traditional material, handicrafts, sarees, whatever, the GI products which is being produced in Bengal are being sold through that outlet.
So they have also identified few communities along with that, this particular community. And I must tell you, nowadays, till today, the business of Govindabhog, not from this community, but I'm talking about from West Bengal, is 180 crore. So it is only 10 years. This is the reach of and the benefit of this particular award that it has been given to the communities a lot of money. So these are, you know, the on the lower side. This is a lady group from Konkan, who are those who are conserving a particularly small, very pungent red chili. So these are certain, examples. So these are the awardees who are from UP. So we have given Sri Prakash Singh Raghuvamshi for, he's a farmer innovator. He registered a lot of wheat varieties. He worked for wheat varieties, Kudrat and Karishma. There is a community called Conservation of Mango Diversity, as I said, Kalimullah Sahab ने इनको फेमस किया जिनसे उनको पद्मश्री भी मिला है. And they are maintaining the original Dasheri Malihabadi trees in their area. So apart from that, then there are Chandrasekhar Singh, Jayaprakash Singh, certain other communities who have received this award. Unfortunately, sir, we didn't get much applications from Uttar Pradesh. So it is also an opportunity to request both of the directors are here to see and mentor. If you found any, farmer innovator, those who are, conserving medicinal plants, whatever, forestry trees, medicinal plant, rare trees, the application date is not yet final. So it is still open. Maybe about 31st of August, there is an application. If you want, I will send you a model application to see, and if you find it out that there is a genuine, so I believe a lot of scientists are here. They must, whenever they go for an exploration, interact with the people, they must be in contact with certain farmer innovator. And if they identify somebody, they are the fit case for getting either a community award, a community as a whole, or an individual award. As you see, sir, there are 10 applications, there are 5 every year. How many we got? 6 in 2 years. That's a sad story. We say that there are about 60 crore farmers, and there must be about 1 crore innovator or people those who are conserving. We could not even identify 10 communities, 5 communities in a year. That's a sad story. Whatever. So my request to both of the directors, please go back, talk with your people, find it out if there are people who are conserving this or not. So the award is from West Bengal, and that's from me. Thank you. Any question? Thank you so much, sir, for enhancing our knowledge. Now, Dr. A.K. Shashni sir is requested to kindly felicitate the guest with the memento as a token of remembrance. पढ़ाएंगे या नीचे? आप लोगों की क्वेश्चन है कि सब कुछ समझ में आया? आप लोग फीचर में दे रहे हैं. What the years? घंटे तो फीडबैक खाना रखेंगे तो आप अगर 10 दिन 15 दिन 20 दिन लगते हैं उसके स्वाद में फर्क आता है. सर अगर सर उसकी इसलिए हमें पता है कि सीट को अच्छा नहीं करना, तो हम उस समय उसको लगता है कि स्वाद नहीं है ना. एक दिन की बात हो रही है, कुछ सीट 2 साल 3 साल 5 साल रह सकते हैं, उसके बाद नहीं रह सकते. फिर हम उसको निकाल उसमें से नहीं जाती. कुछ सीट सारे जो दिया है हम ये टेस्ट करते हैं पुराने के टाइप में से हम दोनों से है ना.
हाँ सर, पता है। आपको क्या लगता है ग्राफ्टिंग और लेयरिंग के बारे में? आपका क्या, आप कहाँ से है पहली बार? आप कहाँ से है सर? नहीं, मैं वो भी पूछ रहा हूँ किस जगह से है। मैं पूछ रहा हूँ कि आप क्या इस इंस्टीट्यूट की पार्ट है? देखिए, ग्राफ्टिंग लेयरिंग तो एक प्लांट प्रोपागेशन की जरिए है ना, उसमें लीगल इलीगल की बात बोला। आप अगर कोई प्रोटेक्टेड वैरायटीज से इलीगली ग्राफ्टिंग और लेयरिंग करते हैं, अच्छा ग्राफ्टिंग किस में करते हैं? लेट मी आस्क यू। लेयरिंग लेवल में होते हैं, आपको गोवा में हो जाएगी या जो भी है। अगर इलीगली आप कर रहे हैं जो प्रोटेक्टेड वैरायटी, तो ऑब्वियसली इलीगल। ये प्रॉब्लम क्या है कि जो एक सीड बिल आना था ऑफ द रिकॉर्ड, सीड बिल आना था, तो उसमें क्या था कि नर्सरीज को रजिस्टर करने की एक प्रोविजन था। सारे जो आप घर से बाहर जाके बहुत सारी पौधे आपको इक्सोरा हो चाहे कुछ भी हो मिलते हैं, इसमें बहुत सारी वैरायटी रजिस्टर्ड। भारत इतना बड़ा देश है कि आपको पता नहीं है कि कौन सी वैरायटी रजिस्टर्ड है। विदेश में आप अगर जाएंगे, कोई भी नर्सरीज आप नेदरलैंड जाए, जर्मनी जाए, कहीं पे भी जाए, नेम्ड वैरायटीज कहाँ पे है, वो जब बिकेगा एंड पॉइंट रॉयल्टी वो जो रजिस्टर्ड वैरायटी ब्रीडर है ना, उनको मिलता है। ये हमारे देश में तो टाइम लगेगा सब चीजें। सीट के मामले में नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारी काउंटरफेट फेक आपको मोबाइल ही मिलते हैं। होगा, लंबी प्रोसीजर है, आपकी और हमारी इच्छा होना चाहिए। धन्यवाद। इसका ट्रेडमार्क ऑफ एनबीआरआई, आप गार्डन जाएंगे तो देखेंगे एक बहुत पुराना पेड़ एक साधु है। तो बड़ा Now, Dr. Vivek Srivastav is requested to propose vote of thanks to the invited guests and the gallery. It's my privilege to propose a vote of thanks to Paul, who has made this program a success. And I begin with giving big thanks to CSIR, especially head IPU and TMD, who is also with us here, who has conceptualized this program and asked us to organize it. Secondly, I would like to thank our director. From concept to reality in every step of execution has helped us for bringing it to the stage where we are today. I also thank to Chairman PPV&FRA, Dr. T. Mahapatra, who upon our request has sent us the resource person who has given us this informative lecture. And I will also like to thank to our keynote speaker, Dr. Deepak Roy Chaudhary, whom we are listening just now, and who has given knowledge about many aspects of PPV&FRA, and which will be beneficial for all of us in future, I believe. I also thank Director CMAP, who is by his presence and who has also helped us in logistics also for students. And thanks are also due to Principal Kendriya Vidyalaya, who has agreed to send students for this program. Many thanks are also due to Dr. K.V. Prasad, Director, TFR,
who, upon our request, has spared from his busy schedule to come to this program as guest of honor and also enlighten us with his words of wisdom. And lastly, I would like to thank all those who has helped to organize this program, especially my colleagues, Dr. Rajat, who has helped in every step, and all the scientists, faculty, students, teachers who have come here and who have joined us online through YouTube or Microsoft Team platform, who have joined us and make this program successful. Thank you very much. Now all of you are kindly requested to stand up for national anthem. Now I cordially invite you all for the tea in our canteen, and the invited guests are requested for proceeding to the director conference room. Thank you.